प्रज्ञा, पढ़ाई हो रही बेटे? बहुत कम बच्चे क्लास ज्वाइन किए अभी तक। So now, in the continuation of revision class, today I am going to discuss about the OSI model, TCP/IP model, and other features of OSI models.
So first one is the OSI model and function of each layer. This is the first topic. So there are many users who use computer network and are allocated all over the world. For national and worldwide data communication, system must be developed which are compatible to communicate with each other. So OSI model is basic building block or the model to establish a network. There is a slight difference between ISO and OSI. ICO जो आपका है मेन, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है. I already told you the difference between OSI and ISO. So ISO stands for International Organization of Standardization, whereas the OSI is known as Open System Interconnection, and it is commonly used as OSI model. So the ISO is an standard which suggests OSI model to establish a network or the network architecture. This is done or developed in 1984. So there is a difference between OSI and ISO model. ISO is an standard and OSI model comes into that standard. ठीक है. ISO जो आपका है स्टैंडर्ड, उसका 9001-2000 वर्जन directly deal with the software engineering, software development procedure and network architecture. इन सबको ये वर्जन कवर करता है, ISO 9001-2000. To reduce the design complexity, most of the network are organized as a series of layer or level, each one built upon one below it. The basic idea of layered architecture is to divide the design into small pieces. We will also discuss TCP/IP model in the later section of this presentation. नहीं बेटा, सबको तो एंट्री मिल रही है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है. अच्छा, ट्यूट वाले लिंक में चले गए थे. तो लेकिन nowadays TCP/IP model is known as ancient or old model because the upper level of layer in TCP/IP model, which known as application layer, in the suggestion of ISO standard, it bifurcates into 3 layers. These are session layer, presentation layer, application layer. So this is the basic idea to segregate and fix the role of responsibilities of each layer. ज्यादातर ये होता है किसी भी लेयर का या किसी भी मॉड्यूल का फंक्शन करने का तरीका कि आप उसके वर्क को और ज्यादा डिफाइन कर पाए, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम पार्टीशनिंग अप्रोच. द डेवलपमेंट प्रोसीजर or the project development procedure is also suggests that each product or the project should be divided into small module. This is also known as the property of modularity. So in that concept, the design of network architecture and its layer divide into small pieces or sub layers. So each layer add to services provided by the lower level layers in such a way that the highest layer it provide has a full set of services. The basic element of layered model are: first one is services, protocol and interfaces. So what is services? Yeah, what is service? A service is a set of action that a layer offers to another layer or the higher layer. In the OSI model there are 7 layers. अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, जो कि स्टार्टिंग लेयर इज फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर,
transport layer, session layer, presentation layer, application layer. So physical layer known as the lowest level of layer that dedicates and the main responsibility of the physical connection of devices and the network establishment procedure. So whether it is cabling, it is topology, okay, transmission media, ये सब जो है सारे काम, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, ये सारे काम जो है वो फिजिकल लेयर के होते हैं. नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज प्रोटोकॉल. A protocol is set of rules that a layer uses to exchange information. And third, a interface. A interface is a communication between the layers. The mode or the method or the mechanism by which layers are communicate to each other known as interface. In our OSI model, there are seven layers. And the lower level of layer, these are whether physical layer, data link layer or network layer, and the upper level of layer, that is also known as user support layer. These are session layer, presentation layer and application layer. But transport layer जो layer है वो दोनों, जो लोअर लेवल ऑफ लेयर जिनको हम लोग नेटवर्क लेयर के नाम से जानते हैं एंड द अपर लेवल ऑफ लेयर जिनको हम लोग यूजर सपोर्ट लेयर के नाम से जानते हैं, इनके बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर एज वर्क्स एज एन इंटरफेस. सो इंटरफेस इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द लेयर्स. In this diagram, there are 7 layers of OSI model. First one physical layer, next data link layer, third one is network layer, fourth one is transport layer, fifth one is session layer, sixth is presentation layer, and seventh is application layer. These are 7 layers of OSI model. So layer 1, 2 and 3, that is physical, data link layer and network layer, are network support layer. I already told you. These are known as lower level layers or network support layer. While layer 5, 6, 7, that is session, presentation and application layer, are user support layer and also known as upper level layers. ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसमें ये पूछा जा सकता है. एंड ट्रांसपोर्ट लेयर लिंक्स द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इंटरफेस बिटवीन नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर. This is the diagram, pictorial representation of the physical communication while device A and device B connected by means peer to peer protocol, और सारी layers आपस में connected है. ठीक है. Now come to the responsibilities of each level layer. So first layer is physical layer. Physical layer is the lowest layer of all. It is responsible for sending bits from one computer to another. This layer is not concerned with the meaning of bits and deals with the physical connection to the network and with transaction or the transmission. This layer defines electrical and physical detail represented as 0 or 1. So the representation of bits is the prime role of physical layer or the lowest level of layer. Representation of bits, I already told you. Data in this layer consists of a stream of bits. Second, it also decides the data rate. This layer defines the rate of transmission, which is the number of bits per second. तो किस रेट से डेटा जाएगा, किस रेट से ट्रांसफर होगा, दिस इज आल्सो डिसाइडेड बाय द फिजिकल लेयर.
Next is synchronization. It deals with the synchronization of transmitter and the receiver. So different types of protocol also works during this transmission. So synchronization works according to that protocol. इसमें 3-way हैंडशेक है, 2-way हैंडशेक है, डिफरेंट मैकेनिज्म रूल्स वर्कआउट होते हैं. नेक्स्ट, इंटरफेस. द फिजिकल लेयर डिफाइंस द ट्रांसमिशन इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम. अभी हम लोग मीडियम भी पढ़ेंगे, ठीक है. ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ेंगे डिटेल में, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया. उसमें भी वायरलेस और वायर ओरिएंटेड, कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड मीडिया होते हैं. Line configuration. The physical layer connects device with the medium, point-to-point configuration and multi-point configuration. Topologies. Device must be connected using the different type of topologies which is already discussed in yesterday's lecture, जिसमें मैंने आपको mesh, star, ring, bus, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाया था, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टोपोलॉजी. ट्रांसमिशन मोड्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स. फिजिकल लेयर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन 2 or more devices that are simplex, half duplex और the full duplex. Simplex का मतलब जो भी ट्रांसमिशन होगा वो एक ही साइड से होगा. ओनली वन सेंडर एंड रिसीवर विल बी देयर. हाफ डुप्लेक्स में दोनों साइड से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, सेंडर से भी रिसीवर की ओर जाएगा एंड वाइस वर्सा, जो भी कंफर्मेशन है. बट एट ए टाइम ओनली वन स्टेशन, वेदर इट इज सेंडर और रिसीवर, सेंड दियर डेटा. while in full duplex mode both sender or receiver sends their information, whether it is any data or whether it is confirmation of data that can be sent, or any request can be sent parallelly, एक साथ. वहां वेट करने की कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, इट डील्स विद बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन. फिजिकल लेयर आल्सो deals with baseband and broadband transmission. Now the responsibilities of second layer, that is data link layer. Data link layer, as name suggests, data. It directly deals with the transfer of data, type of data, packets का फॉर्म क्या होगा, पैकेट्स जाएंगे किस तरह से, उनको कंट्रोल कैसे करना है. So all dealing with data is done by the data layer या data link layer. So data link layer is most reliable node to node delivery of data. It forms frames from the packets that are received from network layer and gives it to the physical layer. Error controlling is easily done. Error detection bits are used by the data link layer. It also capable to correct the errors. If there are any error detection, then it is also capable to correct these errors. Functionalities or functions or responsibilities of data link layer. ये सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान करिए और बहुत अच्छे से इस पीपीटी को पढ़िए, मेमोराइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि फंक्शनलिटीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फर्स्ट यूनिट में टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडिया और ओएसआई मॉडल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है. और फंक्शनलिटीज ये हर पूरे यूनिट में, चाहे ये सेकंड यूनिट हो, थर्ड यूनिट हो या फोर्थ यूनिट हो, ये फंक्शनलिटीज पे बेस्ड ही आगे के यूनिट्स हैं. तो फंक्शनलिटीज बहुत अच्छे से समझना है. तो फंक्शनलिटीज ऑफ डेटा लिंक लेयर, फर्स्ट वन इज फ्रेमिंग. Frames are the stream of bit received from the network layer into manageable data bits. So, data link layer makes the frames. Frames are nothing than the collection of data.
तो कलेक्शन ऑफ डेटा को फ्रेम हम लोग फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं. कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स या कनेक्शन ऑफ मोर देन 2 और फ्रेम्स इज नोन एज पैकेट्स, और कलेक्शन ऑफ पैकेट इज नोन एज मैसेज और द इंफॉर्मेशन send to sender, send to receiver from the sender end. So framing is the prime role of data link layer. Second one is physical addressing. The data link layer adds a header to frame in order to define physical address of the sender or receiver of the frame. If the frames are to be distributed to different system on the network, so physical addressing कि किस तरह से ये वाला पर्टिकुलर फ्रेम किस स्टेशन के लिए, किस रिसीवर के लिए है, बिकॉज देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट सेंडर सेंड द फ्रेम एट ए टाइम टू डिफरेंट रिसीवर. इट इज आल्सो पॉसिबिलिटी इफ it got you can say effective resources and you can say that expected location and token or the time. तो उस केस में क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में टू अवॉइड कोलिजन ये मोर देन वन पैकेट्स कैन सेंड टू मोर देन वन रिसीवर आल्सो. सो इट इज safe and it always kept in mind which packet should be sent to the which receiver. इसलिए एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. फ्लो कंट्रोल. When more than one packet are sent from sender, a flow control mechanism to avoid a fast transmitter from running a slow receiver, either by buffering the extra bit is provided by flow control. This prevents traffic jam at the receiver side. There are different techniques to control the flow of data. These are sliding window protocol, stop and wait, और कभी कहीं पे जो है स्टॉप एंड वेट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अलावा कभी कभी क्या होता है कि यू कैन स्टोर द डेटा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अनटिल अनलेस जब तक आपको लगे ना कि कनेक्शन या जो आपका कंजेशन है वो अवॉइड ना हो पाए या दूर ना हो सके, या आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी जैम है तो काफी समय तक इसको होल्ड भी किया जा सकता है. स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल के अलावा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अलावा ये भी एक मेथड है जब दोबारा से रिसीवर, जिसको हम लोग कहते हैं रिपीट रिक्वेस्ट, रिसीवर फिर से अपनी रिक्वेस्ट को रिपीट ना करे तब तक भी उस समय तक भी डेटा आपका होल्ड पे रहता है. दिस इज अनदर काइंड ऑफ फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स दैट इज इन रेयर केस डेटा लिंक लेयर इज यूज्ड. नेक्स्ट है एरर कंट्रोल. Error control is achieved by adding a trailer at the end of frame. Duplication of frame are also prevented by using this mechanism. I already told you different type of error detection and control techniques. वो checksum हो या cyclic redundancy check हो या LRC हो, long mutual redundancy check, इस तरह की दो तीन हम लोगों ने टेक्निक पढ़ी हुई है. पैरिटी बिट का एक एग्जाम्पल भी पढ़ा है उसमें. And also another responsibility of data link layer is access control. Protocol of this layer determine which of device has control over the link at a given time. There are two parts of data link layer, that is LLC, logical link control layer, and MAC, media access control layer. Media access control layer is also helpful to allocate the MAC address. डेटा लिंक लेयर LLC एंड MAC ये बहुत बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर जो है आपके यहाँ खास करके जो है जो पूछा जाता है उसमें कि ये कितने टाइप का लेयर होते हैं, कितने टाइप के लेयर से आप इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, इन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कितने टाइप से होती हैं. तो इस तरह से ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर जिसमें कि मोर देन वन करेक्ट आंसर जो सेक्शन बी का होता है वो जहां पे बनता है या फ्रेम होता है. सो डेटा लिंक लेयर LLC एंड MAC. LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर इज द अपर लेयर ऑफ टू इन डेटा लिंक लेयर.
It is essential for the communication between devices. It supports connection oriented and connectionless services both. MAC, media access control, is the lower layer. It is responsible for providing a method for station to gain access to the medium. Layer 3, that is network layer. The network layer deals with the mainly network establishment as well route deciding. It routes the signal through a different channel from one node to other. It acts as a network controller. It manages the subnet traffic. It also decides by which route data should take. It divides the outgoing messages into packets. मैसेजेस अगर बहुत बड़ा होता है तो इनको फर्दर पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी नेटवर्क लेयर का होता है. ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज फ्रेम, कलेक्शन ऑफ फ्रेम इज नोन एज पैकेट्स एंड द कलेक्शन ऑफ पैकेट इज नोन एज मैसेज. सो इट आल्सो divides the outgoing message into small packets. Functions of network layer. It translates logical network address into physical address. Second, routers and gateway operate in the network layer. Mechanism is provided by network layer for routing the packets to the final destination. Connection services are also provided by network layer. Breaks larger packet into small packets. I already told you internetworking and networking devices, जिसमें मैंने आपको बताया था रिपीटर, ब्रिज, रूटर्स एंड गेटवे. तो रिपीटर्स वर्क्स ओनली फॉर फिजिकल लेयर. द कैपेसिटी ऑफ द ब्रिज इज अप टू 2 layers, that is physical layer and the data link layer. The capacity of routers are up to the 3rd layer, means it also deals or provides services to physical layer, data link layer and network layer. तीनों लेयर में ये काम करता है. And the gateway provides services or operate into all layers: physical, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer and application layer. So it provide services to all layers or entire model of OSI. Layer 4 is transport layer. It decides if data transmission should be on parallel path or single path. It receives message from the session layer and above it convert the message into smaller units and pass into the network layer. Transport layer breaks the message into small units so that they are handled more efficiently by the network layer. It is also responsibility of network layer, but transport layer also do this. Functions of transport layer. Service point addressing. Transport layer header includes service point address, which is port address. Segmentation and reassembling. A message is divided into segments. Each segment contains sequence number, which enables this layer in reassembling the message. It also do the flow control. This layer flow control is performed end to end. The error control responsibility, which is already done by the data link layer. Transport layer also actively participate error control. Error control is performed end to end in this layer to ensure that complete message arrive at the receiving transport layer without any error. Error correction is done through retransmission. Now come to the layer 5. This is session layer. Session layer manages and synchronize the conversation between two different applications. Transfer of data from source to destination. Session layer streams of data are marked and resynchronized properly.
so that the ends of messages are not cut and data loss is avoided. Functions of session layer. First one is dialogue control. This layer allows two systems to start communication with each other in half duplex or full duplex. Synchronization. This layer allows a process to add checkpoints which are considered as synchronization point into stream of data. For example, if a system is sending a file of 800 pages, adding checkpoints after every 15 pages is recommended. This ensures that 50-page unit is successfully received and acknowledged. So this is also beneficial at the time of crash. If crash happens at page number, there is no need to retransmit 1 to 100 pages. अगर 110 नंबर पेज पे कहीं क्रैश आ रहा है 110 पे, तो देन देयर इज नो नीड टू रीट्रांसमिट टू 100 पेजेस. सो जो सिंक्रोनाइजेशन के जो पॉइंट्स होते हैं मेजर और माइनर, ये इसीलिए बनते हैं. ये हम लोग ने आगे भी डिटेल में काफी पढ़ा हुआ है. एंड session layer also decides who and when send the packet. It also regulates the connection establishment process, which is the prime role of transport layer. ये सारे काम भी session layer के होते हैं. The presentation layer. The presentation layer. The primary goal of this layer is to take care of the syntax and semantics of the information exchange between two communicating systems. Presentation layer takes care that the data is sent in such a way that receiver will understand the information and will be able to use the data. Functions of presentation layer. First function is the translation. Before being transmitted, information in the form of characters and number should be changed into bit stream. So translation is the prime role of presentation layer. Encryption. It carries out encryption at the transmitter and decryption at the receiver. Compression. It carries out data compression to reduce the bandwidth of the data to be transmitted. It is important in transmitting multimedia such as audio, video, and text. Compression is also two type. It is lossless and lossy. दो टाइप का कंप्रेशन होता है. Last and the most या topmost layer is known as application layer. Transferring of files, distributing the result to the user is also done in this layer. Mail services, directory services, network resource, etc. are services provided by application layer. It is also a layer which directly deals with the user. So many features, responsibilities, support directly send to the user, directly cooperate with the user is done by the application layer. All application is maintained or running at the end of user is done with the application layer. There are many number of protocol used in application layer to provide services to effective user. This layer mainly holds application program to act upon the received and to be sent data. Main functions of application layer. First one is mail services. You can say that electronic mail, or you can also say that the internal mail server. Electronic mail, email, whether it is third party service provider or internal mail server. This layer provides the basic for electronic mail forwarding and storage. Second one is directory services. This layer provides access for global information about various services.
FTAM फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट, इसको हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है. इट इज स्टैंडर्ड मैकेनिज्म टू एक्सेस फाइल एंड मैनेज इट. हम लोग ने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है. Protocol commonly used at application layer. These one are, first one are HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Second one is FTP, File Transfer Protocol. Third one is SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. NFS, Network File Services. And last but not least, Network Virtual Terminal. Now advantages or the merits of OSI model. OSI model distinguishes well between the services, interface and protocols. जो हम लोग ने शुरुआत में पढ़ा था, सर्विसेज कौन सी, इंटरफेसेस हैं और प्रोटोकॉल्स हैं. Each and every layer contains different protocols to manage, provide good services and exchange information to each other. Protocol of OSI model are very well hidden. Protocol can be replaced by new protocol as technology changes. Support connection oriented services as well as connectionless services. These are the most and you can say the prime advantages of OSI model. Besides different merits and advantages of OSI model, there are some limitations or demerits or disadvantages of OSI model. You can say that these are limitations. You can't say that are disadvantages. So model was devised before the invention of protocol. This is fact. The model is already proposed or developed and also in use. Now new protocol are used, new protocol are added as per the requirement and the problem arises. This is fact. So this is not demerit or disadvantage. You can say that in fact this is limitation. Fitting of protocol is tedious task. तो ये भी थोड़ा सा है कि इसमें जो है tedious task, you can say that कि excuse me fitting a protocol is tedious task. You can say that new protocols are arises, new problems are arises. So first one, it is a tedious task or you can say that tough task to decide this problem is causes or comes by the incapability of which layer, whether it is you can say that physical layer, network layer, session layer, presentation layer. So it is very tedious. Either you discover the new protocol, find out new protocol or set new protocol. So whether it is fixed or fit into that particular level of layer, it is just used as a reference model. This is also true. It is already suggested and it is referred or suggested by ISO standard, but it doesn't bound or force to any user to use or refer this model. So it is only reference model, but it is very useful. It is advisable to use that particular reference model to avoid different problems, different errors may be causes to your, you can say that risk or hamper your network. इससे बचने के लिए यह रेफर किया जाता है तो कोई ऐसा कारण ना बने या कोई ऐसा कोई क्लॉज ना लगे या कोई क्लॉज ना आ जाए कि आपका नेटवर्क हैम्पर हो या टास्क परफॉर्म ना हो पाए. सब लोग अटेंडेंस लिख दीजिए पहले तो चैट बॉक्स पे. सभी लोग अटेंडेंस लिख दीजिए. देखिए जो इस पे अटेंडेंस नहीं लिखेगा उसकी अटेंडेंस मार्क होगी नहीं. कल भी मैंने देखा था लोग यहाँ पे इनरोल ज्यादा दिख रहे थे और लेकिन अटेंडेंस कम लोगों की थी.
Only 32 students mark their attendance. And it is advisable to all of you that this is the revision time in all classes, all courses and subjects. So कोशिश ये करिए कि ज्यादा क्लासेस करें. अटेंडेंस अगर आपकी डाउन हो जाएगी यहाँ पे तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जो भी इंटरनल वगैरह बनेगा उसमें अटेंडेंस विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. अभी भी ओनली 35 स्टूडेंट मार्क दियर अटेंडेंस और बोर्ड पे मुझे 38 स्टूडेंट दिख रहे हैं. चलिए, TCP/IP model, transmission control protocol and internet protocol. It is the network model used in the current internet architecture as well as TCP is the basically for connection oriented services, whether IP is especially for connection less services. TCP/IP, that is Transmission Control Protocol, Internet Protocol, was developed by Department of Defense Project Research Agency (ARPA), later DARPA, as part of Research Project Network Interconnection to connect remote machine. This is ancient and very old model. The properties of TCP/IP model was flexible architecture, adding more machine to a network was easy. Flexible architecture और flexi architecture की वजह से ही, due to this flexibility, TCP/IP model is further enhanced or broken into OSI model, or you can say that developed OSI model, in which upper level of layer, application layer, is divided into three different layer: सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर इटसेल्फ. ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का ही रीजन है. रोबस्ट कनेक्शंस रिमेन इंटैक्ट अंटिल द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मशीन्स वर फंक्शनिंग communication. The overall idea was to allow one application on one computer send data packets, another application running on different computer system. So this is the comparison between OSI and TCP/IP model. I already told you many times. These are the network access layer, physical और data link layer है. फिर वहां पे इंटरनेट लेयर थी जिसको हम लोग नेटवर्क लेयर कहते हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर रिमेन सेम एंड लास्ट वन इज द एप्लीकेशन लेयर. दिस वाज द एंशिएंट, वेरी एंशिएंट TCP/IP मॉडल. बट जो उसके बाद भी एक आप और भी देखेंगे नया इसका जो TCP/IP मॉडल एंशिएंट के बाद फर्दर इनहेंसमेंट हुआ, रीडेवलपमेंट हुआ, तो उसमें फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर है. ये बहुत ही एंशिएंट वाला TCP/IP मॉडल यहाँ पे कंपेयर्ड है. यू कैन टेक स्नैपशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड. हालांकि ये आपको नोट जो है दिख भी रहा होगा, इसका रेफरेंस भी दिख रहा है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा भी इसको कम से कम आप जब कंपैरिजन के लिए आए तो इसका स्लाइड जरूर एक नोट ले लीजिए या इसके स्नैप ले लीजिए. सो दिस इज ऑल अबाउट OSI model and comparison between OSI and TCP/IP model. नेक्स्ट टर्न पे थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे. कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस सर्विसेज के बाद बात करेंगे और डिफरेंट रोल ऑफ लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल, इस पे भी हम लोग बात करेंगे. और साथ ही साथ ट्रांसमिशन मीडिया, माय नेक्स्ट टारगेट और जो यू कैन सजेस्टेड टॉपिक इज फॉर रिवीजन पर्पज ट्रांसमिशन मीडिया. बहुत क्वेश्चन उसमें से फ्रेम होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आते हैं. सो टिल देन बेस्ट ऑफ लक. किसी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं. किसी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं. ठीक. बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू.